Hey everyone. Good evening, guys. Can you all confirm if you can hear me? Hi Aditya. I'll just quickly invite everyone else also, send the link. Okay, this is our third lecture on polynomials. What we are going to discuss today is algebraic remainder theorem. Yes, algebraic remainder theorem. This is today's agenda. We will be learning remainder theorem for numbers separately when we deal with number systems. Today it's all about algebraic remainder theorem. Yeah. Hello Sakshi, hi Gaurav. Good evening. My name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer. I am from Chennai. I have over 6 years of experience teaching quantitative aptitude, and I have trained over 2 lakh students in doing so. Please don't forget to follow #CAT live daily the next time you're on Instagram. Also, these are the 2 groups on Telegram that needs to be followed in order to keep yourselves updated with everything that we have planned. These are the upcoming batches. This one started today. This will start on the 13th and this will start on the 15th. You can become a part of these. These are all for CAT 2021. Some are advanced, some are extreme, and some are absolute batches. Yes. So to join this, use my referral code Surana Live, get your 10% discount. You can also go for Iconic, where you have a personalized mentor. Use my referral code Surana Live for the discount. Yeah. Chalo, let's start remainder theorem. First things first, let's talk about what a remainder is, right? So when you divide, let's say when you divide 5 with 3, yes, when you divide 5 with 3, the quotient is going to be 1 point something, right? The quotient is going to be 1.66 bar. If this 0.66 bar was not to be considered, if this part was not to be considered, then if I had just 1 left, yes, 1 multiplied with 3, I would only have 3, right? That means from 5, how much is it less? 2 less, right? This is called your remainder. Yeah, or in other words, if you were to use what you were taught in school, when you were to divide 5 by 3, but 3 ones is 3, remainder is 2, right? This is called your remainder. What is this 1 called? ये 1 क्या होगा? 1 का नाम क्या होगा? Quotient. Yes, this 3 is called your divisor, with what you divide, right? Divisor. And this 5 is called dividend, what you are dividing. Yes. So sorry. So you can write your dividend or your number n. Let's say this is number. Okay, this is denoted by n. Quotient is q. Remainder is r, divisor is d. Okay, so your number can be written as quotient into divisor plus remainder, 1 into 3 plus 2, right? So when I write 5 by 3 as mixed fraction, I will write it as what? 1 2 by 3, correct? Is 5 by 3 ko I write it as 1 2 by 3, where this 1 is your quotient,
2 is your remainder and 3 is your divisor, correct? Yes, so 3 into 1 plus 2, this is how you go, right? ऐसे ही करते हैं ना, है कि नहीं guys? 3 into 1 and then you go here and add plus 2. 3 into 1 3 plus 2 5. So just like we have remainder, we have quotient, divisor, dividend in numbers, we have the same thing for algebraic expressions also, right? We also have the same things with algebraic expressions also. So when you have a function f of x and when you have to divide this f of x with, let's say, g of x, another function, if the remainder becomes equal to 0, that means f of x is perfectly divisible by g of x, then what do you say? You say g of x is a factor of f of x, correct? Yes or no? I'll give you a quick example for that. Let's say f of x is equal to x square plus 2x plus 1 and g of x is equal to x plus 1. Yeah, when f of x is this and g of x is this, when you divide f of x with g of x, what will happen? Take this x square plus 2x plus 1, when you divide it with x plus 1, this is x times, so you will have x square plus x. What do you get? This gets cancelled off. You have x plus 1 here plus 1 times, right? So x plus 1, remainder becomes what? 0. Yes, when the remainder is 0, then the divisor, this part, is what? Becomes a factor. है ना? Getting it? So when f of x is divided by g of x and the remainder is equal to 0, then we say g of x is a factor of f of x. Cool? And it works vice versa. If the remainder is, if it's a factor, then the remainder will be 0, है ना? This particular division method, this division method is called long division. Yes, it looks very simple when you do it with a factor, but when you deal with something that's not a factor, this could be a little complicated, but most importantly, it could be time consuming. Yes. So let's say if the question given to you was, what is the remainder when x square plus 2x plus 1 is divided by x plus 1, right? You will have to sit and divide this and check if it's 0 or not. If it's not 0, then what it is, right? It could be kind of complicated. So to ease this out, to make this a little more understandable and simple for us to get it, we use something called your remainder theorem. Yes, this remainder theorem is for polynomial expressions. Are you ready for the theorem? क्या आप लोग तैयार हैं for the theorem? Sakshi, Gaurav, Hemant, Nalin, Sakshi, Ivanshi, are you guys ready? Chalo. So according to the remainder theorem of polynomials, if f of x is divided by an expression of the form x minus a, it's necessary that the expression should be of the form, this is the standard form. Yes. If it is divided by x minus a, then the remainder when f of x is divided by x minus a, when the number, or in this case your expression y, is divided by your divisor, you get a remainder that is equivalent of f of a. That is, ये a आप f of x में substitute करोगे.
Yes, f of x when divided by x minus a will always leave a remainder of f of a. Yes, to check this, to confirm this, अपन जो वो पहला क्वेश्चन लिए थे, द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी हैड टेकन, एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड अपना डिवाइजर क्या था, x प्लस 1, राइट. x प्लस 1 इज ऑफ द फॉर्म व्हाट, x प्लस 1. तो इसमें इफ आई हैव टू राइट x माइनस a इन द फॉर्म ऑफ x प्लस 1, x प्लस 1 इन द फॉर्म ऑफ x माइनस a, तो क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू -1. यस, तो माई रिमाइंडर विल बी व्हेन आई सब्स्टिट्यूट x with -1. Yes, f of a, this is going to be my remainder. Getting it? Which is what, x square, which is -1 square plus 2 into -1 plus 1, which is what, 1 square is 1 minus 2 plus 1, 2 minus 2 0. समझ में आ रहा है? Yes, your f of a is equal to 0. That means your remainder will also be equal to 0. Cool? Any doubts, any confusions here? ये बहुत ज़रूरी है, देख लो, ये वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है to understand this. सब yes बोलो, we'll go for an example question. कॉन्सेप्ट आ गया ना समझ में? हाँ गाइस, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आप लोगों को? यस, नो, आ गया? चलो एग्जाम्पल ट्राई करते, क्विकली ट्राई दिस, जल्दी से ट्राई करो. तो मेजर कॉन्सेप्ट वही है, अब हम क्वेश्चन टाइप्स देखेंगे. हाय आशीष, चलो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको. आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू दिस क्वेश्चन. जल्दी से ट्राई करो, क्विक. यहाँ पे हमें f ऑफ x दे के रखा है. f ऑफ x क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7. साक्षी आदित्य से ऑप्शन C 11. इवांशी नलिन ऑल्सो से C 11. वेरी गुड. यहाँ पे आपका डिवाइजर क्या है, d, विच इज ऑफ द फॉर्म x माइनस 2, राइट. हमें क्या पता है, डिवाइजर शुड बी ऑफ द फॉर्म x माइनस a. तो x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 2. x कैंसिल हो गया, मतलब a का वैल्यू क्या है, 2. आई विल टेल यू द रीजन व्हाई आई डू दिस, ताकि आगे जब कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस हो, यहाँ पे ये तो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस हो तो इजी हो जाएगा. तो द रिमाइंडर व्हेन f of x is divided by x minus 2 should be equal to f of a, जहाँ पे a क्या है, 2. So just substitute 2 here. Yes, 3 into 2 square minus 4 into 2 plus 7, which is what, 3 into 4 12 minus 8 plus 7, which is equal to 11. So our remainder when f of x given expression divided by x minus 2 will be equal to 11. कंफर्मेशन चाहिए तो फटाफट से ट्राई करते हैं कंफर्मेशन के लिए, राइट. व्हाट इज द गिवन एक्सप्रेशन, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 टू बी डिवाइडेड विथ x माइनस 2, है ना. कंफर्मेशन चेकिंग के लिए ये. सो 3x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x इंटू x इज 3x स्क्वायर, 3x माइनस 2 इज माइनस 6x. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा. तो इफ आई ऐड 2 टू दिस, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू x इज 2x माइनस 4. यस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये क्या हो गया, 11. दिस इज योर रिमाइंडर. कंफर्म हो गया, चेक्स आउट, राइट. आशीष कुमार क्लियर है अभी? बाकी लोग सब यस बोलो, समझ में आ गया तो.
कितना सिंपल हो गया नहीं. You don't have to sit and divide and end up making a mistake with it. Rather you can do what? Directly just solve it. Yes, get the remainder up front without breaking a sweat. चलो quickly try this now. जल्दी कोशिश करो. Hello Milan. आदित्य साक्षी से A -28, गौरव says D 98, okay. इवांशी says A. मिलन आ सकता है मिलन. Here we will accept negative remainder also, क्योंकि पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है. नेगेटिव रिमाइंडर इज ऑल्सो ओके, क्योंकि फिर आप क्या करोगे, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए इससे आप सब्ट्रैक्ट करोगे उसको, तो फिर ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा. लेट्स से इफ योर रिमाइंडर इज -2, तो आप नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो आप क्या करते हो, नंबर से वो सब्ट्रैक्ट करते हो, है ना. नंबर से वो सब्ट्रैक्ट करते हो, तो नंबर x⁴ + 3x³ - 6x² - 6x + 8, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, x⁴ + 3x³ - 6x² - 6x + 6. दिस विल बिकम योर रिमाइंडर. समझ रहे हो, रिमाइंडर वी आर लुकिंग फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर्स, तो दिस वुडंट वर्क आउट. ठीक है, इसीलिए नेगेटिव रिमाइंडर्स आर ऑल्सो ओके. मनीष हल्का सा लेट हो भाई, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हल्के में समझ में आ जाएगा. चलो ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए, दीज आर द टू कंटेंडर्स, राइट. आर f of x is what? x⁴ plus 3x³ minus 6x² minus 6x plus 8. Our divisor given to us is x plus 3. Divisor must be of the form x minus a. So x minus a is x plus 3, or a is equal to -3. So our remainder will be equal to f of a, which is nothing but f of -3, which is going to be how much? x⁴. x⁴ is -3⁴, which is +81, plus this is going to be -81. Yes, -27 into 3 -81, -6 into 9 -54, plus 6 into 3 18 plus 8. Correct? Yes guys. So +81 -81 cancel. This is -54 plus 26. -54 plus 26 is equal to -28. So our remainder is not 98, it is -28. Got it? So not D, A is your answer. Please don't make the mistake of considering this as A equal to 3. This is wrong. A is not 3, it must always be of the form x minus A. ये काफी जरूरी, very important. Okay, try this one out real quickly try this one out. Here can you tell me what will be the value of A? x minus A ना, तो A का वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ. What is the value of A?
Superb, minus 1 by 3. So how do you do it? You know x minus a should be the form. So 3x plus 1. Yes, bring all the x to one side and everything else to the other side. What will you have? What will happen here? Yeah, so what you can do here is easier to divide this entire thing with 3. Divide this with 3. So this will become x plus 1 by 3. So a becomes equal to minus 1 by 3. Yeah. So if a is 1 by 3, then our remainder r should be equal to what? 6 into 1 by 9 minus, so plus 13 by 3 minus 5. Yes, so our remainder will become 6 plus okay, 2 by 3, so 15 plus minus 15, 0 kya? 0. Done. Got it? So when we get 0, what is the clear understanding? That 3x plus 1 is a factor of 6x square minus 13x minus 5. Got it? If it is a factor, then remainder will be 0. Answer is none of these. Very good. Another question type. देखो क्वेश्चन को. Milan and Aditya say C. How about others? Sakshi says C. Very good. Tanishq also says C. Very good, Gaurav. हाँ पूछो मिलन. Ask. So look at this. F of x दिया है, but there are two variables, right? We have no clue what m is. They're saying when it is divided by x minus 2, it leaves a remainder of 1. है ना? Yes. So what do we know? We know that remainder when f of x is divided by x minus 2 is nothing but f of 2. Yes, because x minus a is equal to x minus 2. So a is 2. Yeah, a is equal to 2, right? So f of 2 which is equal to 1, they are saying. All that we have to do now is plug in x के बदले में 2 and find out m का value. So what will happen? F of 2 power 4 is 16 minus 2 into 8 is 16 plus 4 into m minus 11 is equal to 1. This goes off. What do you have? 4m is equal to 12 or m is equal to 3. Got it? This is your right answer. Cool? Understood?
Sorted? Chalo. Try this now. Read this carefully. ऋतिक easy था. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इनइक्वालिटी ग्रेटर है और उसका डी नेगेटिव है तो क्या वो ऑलवेज ट्रू होगा? या विल वर्क फॉर ऑल इमेजिनरी वैल्यूज. It will work for all imaginary values. Yes, correct, Milan. Not for all real number but for all imaginary values. अगर d नेगेटिव है तो x becomes imaginary ना. So on the graph x is y is equal to 0 पे ही रूट बनता है. ग्राफ पे y इक्वल टू 0 पे ही रूट बनता है. तो y अगर मैं बोलूँ ग्रेटर देन 0 है मतलब वो x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा. मतलब अपने रूट्स जो है विल ऑलवेज बी इमेजिनरी ओनली. ठीक है. अगर इनइक्वालिटी लेस है तो भी वही सीन रहेगा. इनइक्वालिटी अगर लेस है तो भी वही सीन रहेगा. इट शुड बी इक्वल टू 0 तभी एक्स एक्सिस को टच करेगा वरना एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, अल्टीमेटली गिविंग इमेजिनरी वैल्यूज. ओके, नलिन एंड आदित्य आर सेइंग ऑप्शन बी इज द आंसर. हाउ अबाउट अदर्स? बाकी लोगों का क्या है? रीड द क्वेश्चन केयरफुली गाइस. क्वेश्चन को आराम से पढ़ना. डोंट बी इन अ हरी व्हेन यू रीड द क्वेश्चन. What is the value of q in this particular expression if g of x is when divided by x plus 1 leaves a remainder of 3 and when divided by x minus 1 leaves a remainder of 4? Sakshi says B, Milan also says B. ठीक है. How about others? Ishika also says B. रॉकेट सिंह ऑल्सो सेज बी. चलो, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इज 3. सो 3 शुड बी इक्वल टू व्हाट? एफ ऑफ -1. ए विल बिकम -1 है ना. तो फटाफट से डालो. एफ ऑफ -1 क्या होता है? एफ ऑफ -1 विल बी 1 प्लस पी plus q plus r plus 8 is equal to 3 है ना. माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस, राइट. सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट एन इक्वेशन वेयर p plus q plus r is equal to -6. Yes, and in the other equation what would you get? x minus 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आ रहा है. So remainder when f of x is divided by x minus 1
is 4 which is equal to what? f of 1. A will become 1 here. तो f of 1 क्या होगा? 1 minus p plus q minus r plus 8 is equal to 4, है ना? तो what do you get? Take the 1 there, you get minus p plus q minus r is equal to minus 5. Agreed? Yes or no? Yes, so now you have two sets of equations. दो set of equations है आपके पास. क्या पूछा गया है? What is asked? What is the value of q? Yes, what is the value of q? है ना? तो what do you do now? Add these two expressions. If I add these two expressions, I'll directly get q का value, क्योंकि p यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, r यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है. So add these two equations. What will you get? p cancel हो जाएगा. 2 times q is equal to minus 11, or q is equal to minus 11 by 2. Sorted. ठीक है, कोई डाउट इधर? ऐड करने पे क्या होगा? ये p कैंसल, प्लस r माइनस r कैंसल. So minus 6 plus minus 5 is minus 11. Q plus q is 2q. Cool? आ गया ना समझ में? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और फिर ट्राई करना. जल्दी करो ट्राई. Read the question carefully and then answer, okay? किधर r प्लस कैसे हो जाएगा? किधर बोल रहे हो आशीष? कौन से इक्वेशन में r प्लस कैसे हो जाएगा? एक जगह पे f ऑफ -1 कर रहे हैं, दूसरी जगह पे f ऑफ 1 कर रहे हैं. आदित्य बड़ी तेजी में हो भाई. आदित्य says B. How about others? तनिष्क, साक्षी, मिलन, नलिन से B. Yeah, so what you can do is you can also go do it like this. Equate it to 0. Equate it to 0. Whatever you get x will become a ka value technically. Yes, so what will you get? 5x is equal to 2. X is equal to 2 by 5, which is nothing but a also. समझ रहे हो? तो what do? Remainder when f of x is divided by 2 minus 5x is equal to f of 2 by 5. Yes. This will give us what? 32 into 2 by 5, 64 by 5 minus 12 minus 5 cancel, 4 by 5. At 60 by 5 minus 12. 12 minus 12 is equal to 0. So the remainder is 0. That means, what does it mean? It means 2 minus fx is 2 minus 5x can easily divide
32x minus 12 minus 5x square. Yes, done. Look at this one now. Try this one. Hi, Shastri ji. Thank you so much. Yeah, go ahead, ask. People run away from these classes like उनको क्लास अटेंड नहीं करने के मार्क्स देते हैं कैट में. सीन क्या है, कहीं और कुछ बट रहा है क्या? कितना भी मेहनत कर लो 9-10 लोग ही आने. चलो कोई नहीं. हाँ, Shastri, you can do previous year questions as a test. Take previous year questions but do it as a test. Fix the time, do it as a test. I think that will be more useful. Everybody says 6. Superb. 6 is the answer. So what do you do here? 2x plus 2 by 4, equate this to 0. You get 2x plus 2 is equal to 0. You get 2x is equal to minus 2, x equal to minus 1. Plug that in there. What will happen? The remainder will be minus 4 plus 7 plus 3. This is equal to 6. This is your answer. Read the question carefully. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. एनी टाइम शास्त्री. If you're giving mocks now, Shastri, please ensure that you focus on the analysis also. Okay, don't simply keep giving mocks and not look at the analysis. What does this question mean? What should be subtracted from n such that d is a factor? What is subtracted? n से आप क्या सब्ट्रैक्ट करने पे d एक फैक्टर बन जाएगा. यू नो n इज इक्वल टू कोशेंट इनटू d प्लस रिमाइंडर, राइट. उस रिमाइंडर को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो कोशेंट इनटू डिवाइजर इट बिकम्स अ फैक्टर, करेक्ट. बेसिकली आस्किंग व्हाट इज द रिमाइंडर. सिंपल. Everybody says B. Very good. B is the right answer. So what do you get? 3x minus 2 is equal to 0. So x is equal to 2 by 3. Plug that in. Remainder is equal to f of 2 by 3, which will be 4 by 9 plus 14 by 3 minus 11. Yes. Consider 9 as the LCM. You get 4 plus 14 thrice is 42 minus 99. So 99 minus 46 is 53. So you get minus 53 by 9. Your answer. Yes, beautiful guys, very good. Try this one out.
Try this question. Nalin says A. 3x plus 7. Others? बाकी लोग? आदित्य and Milan say D. None of the above. Sakshi, Ishika, Gaurav say D. Ivanshi, Rocket. Okay. So none of the above is right. How would you do this though? Reverse engineering. Yes. Try out option A. In option A, what will be the value of A? Minus 7 by 3. If 3x plus 7 should be a factor of 3x cube plus 7x, that basically means the remainder must be equal to 0, correct? So is 3 into minus 343 by 27 minus 49 by 3 equal to 0? Will this be equal to 0? Definitely not. Yes, this lacks a 3, this lacks a 7, not. So A is not a factor. Try with B. B will definitely not work. Why? Because both are positive. This is positive, this is positive. Positive term will not work. A equal to 7 by 3. Remainder will definitely not be equal to 0. Yes, not work. Look at option C. Does option C work? X plus 7, A equal to minus 7. Clearly this is way too big a value. It wouldn't work. Yes. Remainder will be what? 3 into minus 343, right? Minus 343 into 3 plus minus 49. This is too much into negative, right? Not equal to 0 again. So what is our answer? D, none of the above. Yeah. Correct. So this is how you would normally do it, but look at this. Since this expression does not have a constant, यहाँ पे कोई constant नहीं है, तो इसमें factors निकालना थोड़ा सा simple है, right? It's a little simple. So you can write 3x cube plus 7x as 3x square plus 7, है ना? 3x square plus 7. That means x is a factor, and whatever that after multiplying will give us 3x square plus 7, that is a factor. 3x plus 7, if I multiply with any expression, it will not give me 3x square plus 7, that is clear. Yes. Same way 3x minus 7 will not give me 3x square plus 7, this is out. You can try with x plus 7. What do you do? Simply just divide. 3x square plus 7 when divided by x plus 7, will it be divisible? Starting में ही मना हो जाएगा. When you do 3x itself मना हो जाएगा. Why? Because you will have an x वाला part.
यस 3x स्क्वायर तो हो गया बट प्लस 7x है, गेटिंग इट। यहीं पे आपको पता चल गया कि दिस इज अ नो, सो दिस इज ऑल्सो आउट। यस, दिस इज कॉल्ड एनालाइजिंग द रूट्स। गॉट इट? कुल। तो रिवर्स इंजीनियरिंग तो ऑप्शन है ही है, ये ऑप्शन डेफिनेटली है ही है जिंदाबाद, बट इफ यू रियली वांट टू डू दिस इन अ मोर एफिशिएंट वे देन दिस विल बी इट। कुल, चलो थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आज जल्दी ख़त्म हो गया बिकॉज कम लोग थे एंड अपन भी फटाफट। दिस संडे कॉम्बैट हो रहा है मार्च 14 को 2021 12 PM। यस, यूज माई रेफरल कोड सुराना लाइव, यू गेट टू विन अ स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आपके एडवांटेजेस देखो, यू विन अ स्कॉलरशिप प्लस यू गेट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस you get a reality check of how good you are with your concepts. Yes, plus this is something that Chatur from 3 Idiots would do. You would be able to understand how your competition is. Yes, आपको आपका competition कैसा है उसका भी थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। Yeah, so go ahead, give this a shot. Don't forget to use my referral code Surana live when you enroll to the test. This is a free test open for everyone. Yes, this is a live test though. Okay, this is a live test. ठीक है, इसको आप बाद में नहीं दे सकते, बाद में आप क्वेश्चंस देख सकते हो, उसके एनालिसिस देख सकते हो, बट टेस्ट नहीं दे सकते। एंड टॉकिंग अबाउट आस्क अ डाउट, अच्छा रुको, आस्क अ डाउट के पहले कल का प्लान, टुमारोज प्लान, कल क्या डेट है? 12 मार्च। कल 7 AM का नहीं कर रहे सीन, वी विल डायरेक्टली मीट एट 3 PM। एट 3 PM वी विल डू क्या, क्वाड्रिलैटरल्स आज खत्म हो गया, मतलब कल करेंगे पॉलीगन्स। यस, पॉलीगन्स का L1 होगा कल। फिर 8 PM को अपन करेंगे, 8 PM को क्या करेंगे अपन, यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स खत्म, मतलब वी विल डू या मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों कभी भी कैसे भी टेस्ट किए जा सकते हैं, सो डोंट टेक द रिस्क, एंश्योर यू अटेंड देम एंड ट्राई एंड अटेंड देम लाइव, ताकि आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हो, है ना। यस, वी विल बी स्टार्टिंग आवर स्पेशल सीरीज, स्पेशल का अपन सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम सैटरडे 13th March we will be doing series of special classes। ठीक है, मिलन डिफरेंशिएशन से भी बता दूंगा मैं, हाउ टू डू इट विद डिफरेंशिएशन ऑल्सो, बट उसके अलावा भी देर आर वेज, राइट। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा फॉर यू नो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए मैक्सिमा मिनिमा का फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। बट अगर उससे ज़्यादा है, हायर डिग्री के हैं, तो फिर हमें हायर डिग्री के अगर एक्सप्रेशंस हैं तो फिर हमें डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। ओके, डिफरेंशिएशन इज ऑप्शनल। Yes, so we'll do very little questions on that, but more focus on quadratic expressions. Cool? Chalo guys. Sir, what's special about special classes? Sakshi, special classes are free classes on the platform. Free classes on Unacademy app.
yes, if you have not been to the app, कभी ऐप पे अगर आपने क्लास नहीं अटेंड करी है तो वहाँ पे आपको द एंटायर इंटरफेस विल बी डिफरेंट. इट विल बी मोर लर्निंग ओरिएंटेड एंड नॉट मोर कोई भी आ जाता है, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे, राइट. मोर पीपल हु आर इंटरेस्टेड बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, राइट. वहाँ पे एवरीथिंग कुड बी ऑफ अ क्विज फॉर्मेट. यस, वहाँ पे टाइमर होता है, यू हैव अ लॉट ऑफ टूल्स. Yes, and how special my special classes are special? Because we'll be focusing on practice there. We learn a concept here on YouTube and we practice that concept on special. समझ रहे हो? Learn it here, practice it there. Thank you Rocket. Yeah, so I was talking about ask a doubt. If you have a doubt, you don't have to wait for somebody to respond on Telegram. Yes, I don't have to message them or use any other random forums जहाँ पे आपको पता नहीं कैसे लोग क्या respond करेंगे. Yes, so instead what you can do is use the ask a doubt feature that is available on the app. अगर आपने अभी तक Unacademy लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो कर लो. यस, Unacademy's लर्निंग ऐप पे अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इफ़ यू आर अ सब्सक्राइबर, देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लियर्ड विदाउट वेटिंग फॉर एनीथिंग. क्लिक ऑन आस्क अ डाउट फीचर. You can take a picture or you can select one from the gallery, highlight the part that has the question, give some details about the question, which section is it from, and then wait for a couple minutes and you will get your solution. Yes, आपको आपके solution मिल जाएंगे. Yes, apart from that there is also a practice feature on Plus and Iconic. There is also a practice feature. That is, you can open the app. ऐप ओपन करके प्रैक्टिस में जाओगे तो आपका कौन सा सेक्शन का प्रैक्टिस करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो, वेदर इट इज क्वांट, VARC और LRDI. देन यू कैन गो फॉर विच टॉपिक. यस, क्वांट में अगर कर रहे हो तो कौन सा टॉपिक, VARC में कौन सा, LRDI में कौन सा. यहाँ पे आप मल्टीपल टॉपिक्स भी चूज कर सकते हो. यस, and then you can go for number of questions, कितने questions करने हैं आपको, and how much time do you need for them. तो ये आपको quiz format में मिलेगा. ये भी this will also be in the quiz format, but then this is very effective for practice. Instead of simply doing it from a book, yes, instead of doing it from a book जहाँ पे आपके deviation बहुत ज़्यादा होते हैं, rather you can go use the practice feature available on the app. Yes, use my subscription code guys. मेरा referral code use करना मत भूलना, Surana Live. Get a 10% discount by using that. You can also go for Iconic, where you get a personal mentor, you get a personalized test analysis and reports. There is Amit preparation. Yes, and you will be guided by top B school के alumni. Yes, you can also get your Iconic का subscription by using my referral code Surana Live. There's also no cost EMI option available. Thank you very much guys for being a part of this session. I'll see you all tomorrow. Until then, keep yourself safe and happy. Good night. Keep learning and let's crack it.